नमस्कार व्यूवर्स, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी आर्मी व उनके जनरल किस तरह से अपने ही देश की मीडिया को अपने फौजी बूटों तले कुचलकर पाकिस्तानी आवाम के बीच खुद के द्वारा रचित झूठ के गहरे जाल में फंसाकर उन्हीं पर राज करते आई है। अपनी बालादस्ती कायम रखने के इस क्रम में उन्होंने सर्वप्रथम पाकिस्तानी मीडिया को डरा धमकाकर अपनी आवाम के बीच उनके चुने गए पाकिस्तानी राजनेताओं के खिलाफ एक ऐसा झूठा नैरेटिव का जाल बुना जिसके अंतर्गत पाकिस्तानी आवाम द्वारा निर्वाचित सभी नुमाइंदों को सर्वाधिक भ्रष्ट साबित कर आवाम के बीच उनकी स्वीकार्यता को समाप्त कर दिया जाता रहा है और स्वयं को सर्वाधिक ईमानदार, देशभक्त व पाकिस्तान के हामी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि हकीकत इसके एकदम विपरीत होती है। इस दुनिया में हर एक शख्स को मालूम है कि पाकिस्तान में फौज के जनरल ही पाकिस्तान पर हुकूमत करते आए हैं, फिर भले ही शासन में सिविल इंतजामिया ही क्यों ना हो, जिनकी डोर हमेशा से वहां के फौजी जनरल ही खींचते रहे हैं। और मौजूदा दौर में इमरान खान मियां जी की सरकार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर किसी सिविल इंतजामिया ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो यह नकारा फौजी नवाज शरीफ की तरह झूठे मुकदमों में फंसाकर उनकी सरकार को बर्खास्त या नाअहल कर देगी, यथा जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह फांसी पर लटका देती रही है। अब अगर हम इनकी नियत, काबिलियत, ईमानदारी या देशभक्ति को देखते हैं तो पाएंगे कि किस तरह से इस नाकारा फौज ने अपने ही देश को चार जंगों में धकेलकर हर बार पिट चुकी है। कैसे ये अपना हक मांग रही आवाम पर जो इनकी बर्बरियत पर सवाल उठाती है उन्हें सरेआम गोलियों से भून दिया जाता रहा है अथवा हेलीकॉप्टर से नीचे धकेल दिया जाता है। स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए देश को दो टुकड़ों में बांट दिया, परंतु जब खुद की जान पर बन आई तो दुश्मनों का मुकाबला करने की बजाय 1 लाख पाकिस्तानी सिपाहियों ने हथियार पैरों में डालकर सरेंडर कर दिया। किस तरह से दलाली खाकर पूरे मुल्क को दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया गया। ऐसे में यह संभव ही नहीं है कि पाकिस्तान की सिविल इंतजामिया 1 रुपए भी स्वयं की जेब में डाल सके। हकीकत तो यह है कि गरीब पाकिस्तानी आवाम का पूरा पैसा सेना स्वयं हक लेती है और मीडिया कंट्रोल कर पूरा इल्जाम सिविलियंस पर थोप दिया जाता है, परंतु अगर कोई विरोध करे तो कुछ इस तरह से मीडिया को कुचल दिया जाता है। सबूत नंबर 1, पाकिस्तानी फौजी ने बार बार मना करने के बावजूद लाइव रिपोर्टिंग करती एक महिला रिपोर्टर को सरेआम जड़ा थप्पड़। अब तक जो है वो 6 घंटे बीत चुके हैं और ये मैं आपसे कह रही हूँ कि इस वक्त आप मेरे कैमरे को छोड़ दें, आप कैमरेमैन को छोड़ दें, आप कैमरामैन को छोड़ दें। हम अंदर नहीं जा रहे, कैमरामैन को छोड़ें। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, मैं बता रही हूँ। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। ये देख लीजिए, ये है जो मीडिया के साथ, ये मीडिया के साथ अगर ये सलूक किया जा सकता है तो फिर सोच लीजिए कि लोगों के साथ यहाँ पर कितनी बदतमीजी हो रही होगी। छोड़ दो इसे। फोकस करो इसे। सामने से भी व्यू देख लें इन साहब का, ये जरा दिखा दीजिए। ये है वो आदमी जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोगों को बेइज्जत करने के लिए आया। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म? तुम्हारे घर में माए बहने के साथ बदतमीजी कर रहे हो। ये जरा दिखाइए, इसकी जरा यूनिफॉर्म दिखा दीजिए इनको। ये देखिए, ये है इनका एटीट्यूड, ये है। सबूत नंबर 2, पाकिस्तानी फौज द्वारा पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया समूह जियो टीवी पर 2 बार लगाया गया बैन। फिर से बंद किया जा रहा है, किया जा चुका। चीफ जस्टिस ने कहा कि जियो किसने बंद कराया। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया कमीशन के मुतालिक समाअत हुई। जियो टीवी ने कर दिया जाए क्योंकि जियो टीवी को सबसे बड़ा झटका दे दिया गया, वो काम कर दिया गया जो कोई पाकिस्तानी सोच भी न सकता था। Hello, I'm Richard Gisbert and you're at The Listening Post. Here are some of the stories we're covering this week. Pakistan's biggest news channel goes dark. Is the military there playing power games with the news media? In India, journalists reporting on the world's largest biometric database find themselves targeted over their work. Take a television channel off the air, they're not shy to talk about it because they want to signal sense to other media outlets. You could be next. Not in Pakistan. Until recently, the most watched broadcast network there was Geo TV. Early last month, Geo went to black. It remains off the air across much of the country, and no one in a position of authority is saying why. Government ministers and the broadcasting regulator have denied any involvement. The cable companies that pulled the plug on Geo are staying silent, as is the Pakistani military, which has butted heads with Geo before and is suspected by numerous political and media observers as having ordered the blackout. With no explanation offered, and with a former Prime Minister Nawaz Sharif on trial for corruption, as well as elections coming, it would seem that Geo's dominance of the media landscape has once again put it on a collision course with the Pakistani military. Our starting point this week is the capital, Islamabad. Take the biggest news channel in any given country. Globo in Brazil, the BBC in Britain, Channels TV in Nigeria,
That is what has happened in Pakistan with Jio TV. Who is suspending Jio? No one has accepted the responsibility of shutting it down. When I spoke to the cable operators, on the record they said that, oh, we don't know if the channels are being blocked, it must have been some mistake. But when I switched off my tape recorder, they told me that, see, the powers who have instructed us to shut down these channels are much bigger than any government. So who is that power that is much bigger than this government? That would be the military, assisted for just over 7 decades, spending almost half of that time, 32 years, under military rule. Today it has a civilian government, in name, but the generals seldom stray far from power. When the country's most recent military ruler, Pervez Musharraf, took over in 1999, Pakistan had only one television network, the state-owned PTV. Musharraf liberalized the airwaves, allowing for privately owned channels. Today, Pakistan has 86 of them. It's a competitive news landscape, the desperate chase for ratings, often producing sensationalized partisan journalism. It can leave viewers riled rather than informed. Jio TV was among the first of the private news channels to get a license. It grew into a market leader, although Musharraf back then and various civilian governments since have taken issue with the channel's news coverage. Jio's editorial policy is perhaps one of the best that we've seen in Pakistan. Whenever there is opinion presented, any particular issue which relates to civilian or the military, there is always opposing views present in the conversation. क्यों नहीं हुकूमत ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकी? दोनों मामलात को जोड़े ना, वो सियासी मामलात हैं, सियासी मामलात में चीज़ें पॉलिटिकल वो होती हैं, यहाँ सेंसिटिविटी बहुत होती है. This is a trait that we have not seen in many channels in Pakistan. Jio TV was launched in 2002, and in those days Pervez Musharraf was the ruler of Pakistan, and Jio TV played a very important role for the protection of civil liberties, for the restoration of democracy in this country. If anyone want to kill, to murder Jio TV will be killed, but the credibility of Pakistan at international level will also suffer. 2007 onwards is a period when private media in Pakistan grew. But as Jio found its feet, it randomly started to kind of deviate from the policies, from the state narrative on certain issues. आप नेक्टा के सरबराह हैं, आप क्या देखते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करता है? पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता. And what we see now is actually Jio trying to not completely follow the state narrative on politics, and that is largely considered to be the source of current friction between the channel and the military. Jio was offering a bit of an alternative, and even that was not tolerated. Authorities in various countries tend to grow less tolerant of critical journalism as elections approach, and Pakistan has one coming up later this year. Among the election-related topics Jio has covered that may have landed it in trouble, the 18th Amendment, a constitutional change made in 2010 that forbids the military from getting involved in political areas outside its own remit of defense. आपने लिखा कि बाजवा डॉक्ट्रिन विल बी हैप्पी टू डू अवे विद द 18th अमेंडमेंट, यानी कि खत्म हो जाए 18th अमेंडमेंट. The Army Chief of Staff wants that amendment abolished. Jio has taken a contrary and therefore politically contentious view. Then there's the corruption trial of Nawaz Sharif. The defendant is a former prime minister who the Supreme Court permanently banned from politics this past week and whose visibility has been much higher on Jio than on other news channels. Recently, New York Times wrote an article and they claimed that Jio is supporting Nawaz Sharif, so that's why some powerful people in Pakistan are not happy with the Jio TV, and that's why Jio TV is shut down. I personally don't support Nawaz Sharif, but even if Jio is supporting Nawaz Sharif, it is not a legal excuse to shut down a TV channel. Jio has been giving space to very diverse voices.
There have been people who very passionately speak against the corruption of Mian Nawaz Sharif and his family. नवाज शरीफ ने अदालत को कभी सच ना बताया. And there are people who have been speaking in a very objective manner to describe this entire trial. अब तक केस में से कुछ नहीं निकला जिससे मियां नवाज शरीफ साहब की जो जिसे हम कह सकते हैं लफ्जों में कम से कम एक डैमनिंग इंडाइटमेंट नहीं निकली मियां नवाज शरीफ साहब की. अभी There was nothing to instigate, to trigger this at all. The only thing is that Jio and Dawn TV, these are the only two channels right now in Pakistan who are not succumbing to the dictation from the military establishment. To gauge just how supine most of the Pakistani news media have become, how fearful they have grown of the military, and how competitive the news industry there is, don't consider what they have said about the Geo story, but what they have not. Their almost complete silence on the sidelining of their journalistic colleagues at another network tells its own story, one that could, in the not-too-distant future, come back to haunt them. Jio's story has not been reported anywhere except for the social media, and this is extremely unfortunate. This is the level of competition that we have in Pakistan. It's not just competition, it's rivalry. And so naturally, we don't expect any of these rivals to be reporting the shutdown of Jio. Why would they? It's good for their business. Oblige the hidden powers, which are not so hidden. And that is why you won't see any voice from within the media against the closure. Media has never been so silent against the state coercion. It's a very critical moment in Pakistan's media industry when it has to make choices and stand up for itself. Because if it doesn't stand up, then there will be little difference between Sisi's Egypt and this Pakistan.